started recording the lecture. I think that it has been started. Okay, it has been started recording. So I am giving you a suggestion that try to take lecture on your laptop and take a notebook and a ballpoint along with you, because it is not possible to listen and understand each and every point, or memorize all the things. But so you have to write the important concept or points that I am telling you. That is only possible if you are writing the concept or the points that I am telling you. So it is highly recommended to take a notebook or a rough notebook along with you, along with a ballpoint, so that you can write some key points related to the content of this lab, or the experiment number one, or the lab number one. And it is also, although I have started recording the lectures, but it is highly unlikely that you would again listen this lecture, because due to the shortage of time. So it is my suggestion to take this lecture on your laptop along with a notebook and a ballpoint, so that you can write the key points related to the lab. So let's start. First, I would tell you about the introduction of this course. The course name is Power, Distribution and Utilization. Basically, this course deals with two main cores of the electrical engineering. The first is the power distribution. The first portion of this lab covers the concept or the things that are related to our distribution systems, the components that are usually installed, how they work, their working, like cables or other components that are used in substation. That is the first portion of this lab. And the second portion is the utilization of electrical energy. That is it means how effectively you can use the electrical energy for your daily routine works, and how efficiently you can utilize it. So that are the two main parts. The first part covers the concept related to the distribution systems, and the second part is the utilization of electrical energy. These are the two main parts. In utilization, you would study about the power factor improvement, elimination schemes, electrical braking, and other things that are related to the utilization, effective utilization of electrical energy. That are the two main parts. Another thing, that it is highly recommended to ask questions that are that you do not understand by listening the lectures, because in online mode it is not possible to fully interact with the students, but you can be interacted while asking the questions. So it is not necessarily that you can ask a question in English. Because some students are reluctant to ask question in English, you can ask questions in Urdu as well. And if you are not understanding in English, I will try to teach you your particular question in Urdu as well. But it is highly advisable and encouraged to ask questions at any time. I usually take a small break of few seconds after each part of the content to let you ask some questions, because it is very good to ask questions and learn things about the concepts. So any question related to the name of the subject, that is power distribution and utilization, in which we will cover two main topics. The first is the distribution system, and the second is the effective utilization of electrical energy. That are the main purpose of this course. So no questions. So we would move further. That are the CLOs, course learning outcomes of this particular lab course, power distribution and utilization lab. The first CLO is related to the distribution system, that I have told you earlier, that it has two main parts: distribution system and effective utilization of electrical energy. The first CLO covers the experiments that are related to distribution systems, and the second CLO covers the topics
psychomotor. I think connection was lost, but it is restored again. Can you listen me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The second CLO relates to the energy utilization techniques, and both these CLOs, the domain of both these CLOs are psychomotor, that you have to perform experiments in the particular lab on some hardware. Normally, there would be 12 number of experiments, and almost all of them are psychomotor based. It means that you have to physically perform some experiment in the lab. Similarly, there is a complex engineering problem in this particular lab course, and that complex engineering problem is unique to every student, and it can be related to power distribution system or utilization of electrical energy, or both, you can say that. So there would be a complex engineering problem in this lab course as well. And for that particular complex engineering problem, the domain of that complex engineering problem is also psychomotor, cognitive, and affective domain as well, because you have to write a report for this complex engineering problem. You have to think about this complex engineering problem, and similarly, you have to fabricate some hardware project, and that involves the psychomotor domain of this particular CLO. So there are total 3 number of CLOs. The first CLO is related to distribution system. The second is the effective utilization of electrical energy. And third one is related to the CEP, complex engineering problem. Similarly, the first CLO covers the PLO 4 and 10. 4 and 10 are the investigation, in which you have to investigate the different components related to the distribution system, and 10 is the communication, in which you have to write a report or make a practical notebook copy, in which you have to give some viva, and communication is involved in that particular thing as well. The second CLO covers the 5 and 10 PLO. The 5 PLO is modern tool usage. Modern tool usage is not software based, but it can be any electrical instrument that you have to use for the measurement of electric components like current, voltage, power, active power, reactive power, etc. And similarly, communication is also involved in this particular CLO number 2, because you have to write a report and give viva for that particular experiment. And similarly, you are well aware of the complexity problem that are related to PLO number 3, 4, 9, and 10. That you have also done a complexity problem in your previous semesters as well. Have you done any complexity problem in previous semester or not? Yes or no? No, sir. Okay, then it would be your first time that you would be given a complex engineering problem, but do not worry. All things would be explained by me and guided by me, so there is nothing to worry about. When time comes, I would tell you about in detail that what is the complex engineering problem and how to do that particular problem, because that is the main requirement of PEC. And in higher semesters like 6th, 7th, and 8th semester, you have to do a lot of complex engineering problem in almost all the subjects of all the technical subjects related to the electrical engineering. So any questions till now related to the CLO or PLO of this particular course? You can ask questions in Urdu as well. So do not hesitate that do not hesitate to ask questions. You can ask questions in Urdu as well. Okay, next, recommended books. Normally the books or topics that would you cover in your theory would be related to your lab work as well. The topics would be same that you would study in theory. So the theoretical book or the book that you would study in your theory class, and the laboratory manual that I would share with you online, that are the recommended book for this particular lab course. Now the course contents. These do not try to write these list of experiment other things as well, because I have uploaded all the files, the course contents and all the things on your Microsoft Teams, so you can download at any time these list of experiment and CLOs and PLOs mapping and all things as well at any time. So do not try to write down these things.
only write down things that you consider that are important. Do not just write by seeing it on your screen, because that content is already uploaded by me on the Microsoft team of your Power Distribution and Utilization lab course. So there are 12 number of experiment in this particular course. 12 number of experiments, in which half experiments, like 6 experiments, are related to the distribution system, and the 6 experiments are related to the effective utilization of electrical energy, in which the power factor improvement, electrical braking, light elimination laws, etc., or utilization of conversion of electrical energy into light energy and anything like that. So 6 experiments are related to distribution system, and 6 experiments are related to the effective utilization of electrical energy. Similarly, there is another complex engineering problem that can be related to a distribution system or effective utilization of electrical energy as well. So these are list of experiment, in which experiment number 1, to study and analyze the two-wire distribution system. Somehow the sequence of these experiments can be changed according to our need, because in online mode it is not possible for me to perform some experiments. So I have shuffled or changed the sequence of these lab courses from up to down, but the content would be same. These are the 12 number of experiments that we have to perform in this particular lab course. Any question here? Okay, no questions. So let's move to our next thing. Next thing is the course breakup and assessment tools. Assessment type. Wait, some students are waiting in lobby. Okay. Assessment type. There are 12. I have already told you that there would be 12 number of experiments. So there would be 12 lab performances related to that 12 number of experiments, and in which the 6 performances are related to CLO1, that are related to the distribution system, and other 6 performances are related to the effective utilization of electrical energy, that are related to CLO number 2. Similarly, there are 12 number of experiments, so there would be 12 number of lab reports or 12 number of written experiments on your practical notebook that you have to write. Similarly, the 6 lab reports would be related to the distribution system, and the 6 lab report would be related to the effective utilization of electrical energy. And the first 6 labs are related to CLO1, and the other 6 lab reports are related to CLO number 2. Similarly, there is a single complex engineering problem in your lab course that will be 100% related to your CLO number 3. That would related to your complex CLO number 3. That are the mapping of CLO with your course contents. So 12 number of experiments, 12 performances, 12 lab reports, and a single complex engineering problem. That is the 16-week course breakups. This week is our first week, in which we would study our first experiment, that is to study different components used in distribution substation. Although you have seen that the number of this experiment is in 8 number, to study different components used in distribution substation, but I have put this experiment in week number 1 due to online mode, because this is a single experiment that doesn't require any performance in lab. This is basically a theoretical based, or you can say that study tour based experiments that doesn't require any physical presence in your lab. So I have moved that particular experiment in week number 1, so that the performance is not required in this particular lab. Similarly, in week number 2, we would study verification of inverse square law and Lambert cosine law, which can easily be performed in your home and doesn't require any physical visit to the university. And all other experiments are required some performances that would require your presence in the lab. And similarly, there are 12 weeks. In 12 weeks, we would cover 12 number of experiments, and 4 weeks are related to complex engineering problem. That would be complex, and at least take 4 to 5 weeks to complete its in final form. So any question here related to the assessment type,
The marking would be like that. As per prospectus rule, your 50% weightage would be of end semester viva and demo. Your 30% would be your lab report and lab performances, and 20% would be your complex engineering problem. That is the breakdown of your 100% marks. 50% end semester viva and demo, 30% lab performance and lab report, and 20% complex engineering problem. Any question here related to the assessment type or mapping of CLO with your contents? सर तो ये जो ये कॉम्प्लेक्स complex इंजीनियरिंग में कुछ कंसेप्ट दे दें, ये है क्या मतलब? अच्छा, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम अभी तो शुरू में इसके लिए 4 वीक्स अलहदा से असाइंड है, इसलिए इसको साथ में अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक कि हार्डवेयर एक प्रोजेक्ट होगा। हार्डवेयर आपने प्रोजेक्ट पहले भी किए हुए हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट के नाम से या इन नामों से, तो ये भी एक किस्म का हार्डवेयर प्रोजेक्ट है जहां पर आपको कोई चीज़ असेंबल करनी होगी, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा। तो इसको देखकर कोई नाम से इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि बहुत ही कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी कंप्लीट पिक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे इसको वीक नंबर, जब हमारा कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का वीक नंबर 1 होगा, तो उसके अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए आप इसको इतना समझ लें कि जस्ट ये एक सिंपल हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है जो कि आपको बनाना है, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अलावा। तो वो डिटेल सारी बात है इसकी, पूरा जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ और काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम इसको तभी स्टडी करेंगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी इसको बताने का टाइम नहीं है, और अभी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त इसके ऊपर लग जाएगा अगर हम इसकी डिटेल के अंदर चले गए। तो इसको जब हम स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसके मैंने 4 वीक्स, एटलीस्ट 4 वीक्स, और ये माइट बी पॉसिबल कि हम 5 वीक 4 वीक्स तो इसका मैंने असाइन किया, मुझे 5वां वीक भी इसको देना पड़े कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को। तो जब हमने टाइम इसके लिए रखा है तो उसके अंदर ही इसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट एक हार्डवेयर आपने प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन मैं दोबारा बता चुका हूँ कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम, तो वो फिर मैं आपको डिटेल तब बताऊंगा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जी, कोई और सवाल है? Any other question? Okay, no questions. So I think you understand that what would be the focus of this course, and with the title of these experiments, you can know that what we would study in this particular lab course, and by the end of this lab course, what would be the you understand related to the distribution system and the effective utilization of electrical energy. So now let's move to our main task, that is experiment number 1, and this is the only experiment among the 12 experiments that is not performance based. All other experiments are performance based. This is the single experiment that is study based, and previously this experiment was based on some visit to distribution substation, but due to some circumstances of the COVID-19, we are unable to visit distribution substation in group or in this scenario. So this experiment is the only experiment that is not performance based. All the 11 other experiments would be performance based, and normally 1 or 2 experiments can be performed in your homes, but all other experiments require your physical presence in the lab for the proper completion of this lab course. Okay. So let's start our today's topic or today experiment or today labs, that is experiment number 1. The title of today's lab or today's experiment is to study different components used in distribution substation. That particular lab is related to CLO1, that is the distribution substation, in which you would study about the main components that are used in a distribution substation, their working and their main functioning of these components. The objective of this particular lab is to study equipment that is used in substation and to study the function of these equipment that are used in substation. Apparatus, there is no particular apparatus required for this particular lab, because I have told you earlier that this is not performance based experiments. It does require some models or some pictures of the components of distribution substations, and normally a good field visit is necessary to see the physically see the components that are used in distribution substations, that
might be possible or might not be possible in this scenario of COVID-19. I don't know, but let's hope for better result. Theoretical background. First, we would cover the substation. Before going to the distribution substation, first we would cover the substation. I would not read out the things that are written on this manual, just because you can. I have uploaded this particular lab on your Microsoft Teams as well, so you can write or read the things that are written in this particular lab or course contents. I would tell you the basic mechanism or the simple definition of things that are normally used in industry and in substation, etc., and to basically know about the basics of these components. I would not just read out the things that are written on this manual. I would tell you the basic definitions, or in simpler words, that what is substation is, what is the main purpose of this substation is, or distribution substation is, or all the components as well. You can read out this manual, which is also written in a very simple language as well, at any time. Now let's move to, before moving to the distribution substation, what a substation is. Normally the main function of substation is to step up or step down the voltages of electrical energy. Normally substations are installed at the generation side and at the end of transmission lines. At the generation side, the substations are usually installed to step up the voltages to a very high level, to high voltage, extra high level voltages, or ultra high level voltages, so that our current reduces to a minimum value, so our I square R losses would be decreased. That is the purpose of substation that are usually installed at the generation side. And at the end of the transmission lines, these substations are installed to step down the voltages to feed the distribution substation. So that is the particularly the main purpose, to step up the voltage and to step down the voltages, because that is the very basic and necessary phenomena to transmit the electrical energy from the generation side to the utilization side. And if we do not step up the voltages, the current would be very high and the I square R losses would be very high, which could result in high power loss in the transmission network. So to decrease the power losses, we have to step up the voltage to a particular level. That phenomena is only possible with the help of a substation. And there are a lot of other components that are installed in substation, irrespective other than the transformer. The main component is transformer. It can be either be a step up transformer or a step down transformer, but there are dozens of other electrical components that are usually associated with the substation. That is the simple picture of a typical substation, in which you can see that our main component is a transformer, which can be a step-up transformer if it is installed at the generation side, and it can be a step-down transformer if it is installed at the end of the transmission network. And similarly, some other components that would be studied in detail, that what are different components that are usually installed in the substation. But keep in mind one thing, that the main purpose of substation is to step up or step down the voltages, or in some advanced countries where DC transmission systems are used, so substation is also used in that countries to convert the DC current into AC or AC current into DC current. But in a country like Pakistan, its only purpose is to step up down the voltages or step up the voltages, because there is no DC transmission currently in our country. Any question here? So sir, kindly power losses वाली बात को repeat कर दे. अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन मेन थी, मैंने बताया कि मेन पर्पस सब स्टेशन का सबसे क्या है कि वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करना या स्टेप अप करना. हम क्यों वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जनरेशन साइड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर उसका जो वोल्टेज लेवल होता है जनरेशन लेवल के ऊपर, वो कम होता है. अगर हम उसी जनरेशन लेवल के ऊपर सेम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज के कम होने की वजह से. क्योंकि पावर का फार्मूला है P = VI, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट.
अगर हम वोल्टेज को कम रखेंगे तो हमें करंट को ज्यादा रखना पड़ेगा फॉर द सेम पावर टू बी ट्रांसफर्ड। पी अगर सेम हमने रखना है तो करंट ज्यादा होने की वजह से लॉसेस किस वजह से होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस, जैसे पावर लॉस कहते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो जितना करंट ज्यादा होगा आई स्क्वायर आर लॉसेस उससे 4 गुना ज्यादा होंगे। तो हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप करने की वजह से हमारा करंट जो है वो स्टेप डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जब करंट हमारे पास कम हो जाता है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी करंट के कम होने की वजह से कम हो जाते हैं। तो लॉसेस को कम करने की वजह से हम जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं एट द जनरेशन साइड। और जब वोल्टेज को बहुत ज्यादा अप कर देते हैं तो एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस हमें सारी बात है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के अंदर या फिर यूटिलाइजेशन के अंदर फीड करवाना है उस पावर को एट लो वोल्टेज, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा ताकि हम उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें आगे अपनी डिवाइसेस के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर। तो वोल्टेज को स्टेप अप करना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे लॉसेस कम हो जाएं। ठीक है, और वोल्टेज को स्टेप अप जो है वो किया जा सकता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से अप या डाउन किया जा सकता है। तो ये मेन कंपोनेंट है और ये काम होता है सबस्टेशन के अंदर। Excuse me, sir. जी Sir, basically, we step up our voltage. Sir, the insulation of the wire depend upon the voltage. So, and if we increase the current, the size of the conductor will increase. Sir, how it is possible that we increase the voltage and with the same insulation of the wire, keeping the current down? अच्छा, पहली And बात तो ये आप जहन में क्लियर करें कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए हम केबल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, yes, sir. ट्रांसमिशन Yes, नेटवर्क, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर या पावर की ट्रांसमिशन के लिए केबल्स इस्तेमाल नहीं होती हैं बल्कि कंडक्टर इस्तेमाल होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन केबल एंड कंडक्टर इज ऑफ इंसुलेशन। केबल के ऊपर इंसुलेशन होती है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होती ही नहीं है। ट्रांसमिशन के अंदर बेयर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं और एयर एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। एयर जो स्पेसिंग होती है हवा के अंदर, कंडक्टर जो है वो नॉर्मली जो है वो लटके होते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू सम टॉवर्स, तो एयर एक्ट करती है इंसुलेशन। तो हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं जस्ट स्पेसिंग अगर हम बढ़ा दें उनके दरमियान तो उसकी इंसुलेशन उसको प्रोवाइड हो जाती है। तो हम जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा दें उसके ऊपर कोई इंसुलेशन फिजिकली तो होती नहीं है जो डैमेज हो जाएगी। हमने जस्ट स्पेसिंग बढ़ानी है, हम जस्ट टावर की हाइट बढ़ाते हैं और जो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स है उसे बढ़ा देते हैं। उसके बढ़ाने की वजह से उनके दरमियान जो इंसुलेशन है वो बढ़ जाती है और कितनी भी वोल्टेज हम बढ़ा लें वो इंसुलेशन डैमेज नहीं होती क्योंकि एयर एक्ट कर रही होती है एज एन इंसुलेशन। sir, sir, at the other end, if we step down the voltage, जी जी बोलें बोलें। sir, at the other side, if we step down the voltage and the corresponding the current will increase. So, sir, we have to increase the diameter of the conductor. So, with the same scenario. अच्छा, जब हम ट्रांसमिशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन लाइंस हमारी जब खत्म हो रही होती है जहां पर, वहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमारी पावर डिफरेंट जगहों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। लेट सपोज कि पीछे से मेरे पास 100 MVA जो है वो पावर आ रही है, तो आगे 10 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो वो 10 10 10 10 करके मैं उसको तकसीम कर दूंगा तो करंट ऑलरेडी 10 टाइम्स कम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर। तो मुझे हैवी या बड़ा कंडक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर डिस्टेंस इंतहाई कम होता है तो मुझे जो है वो कंडक्टर जो है वो अगर मैं इतना ज्यादा थिक ना भी लगाऊं, थिन भी लगा दूं तो काम चल जाता है क्योंकि उसके अंदर लॉसेस भी डिपेंड करते हैं जितनी ज्यादा लेंथ होगी। ट्रांसमिशन की लेंथ अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होती है, 500 किलोमीटर। तो उसमें लॉसेस होने का डर ज्यादा होता है कि उसकी वजह से हम जो है वो करंट को कम कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा विद इन सिटी होता है जो कि चंद किलोमीटर के ऊपर होता है, 10 किलोमीटर या वो, तो वहां पर हमारी लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो वहां पर अगर करंट हमारा ज्यादा हो भी रहा है तो वो इतने ज्यादा लॉसेस हमें नहीं होते जितने कि 500 किलोमीटर की लाइन में होंगे। 500 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में डिफरेंस है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली हमारा विद इन दी सिटी होता है, तो नॉर्मली 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इतने का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है। तो लेंथ कम होने की वजह से उसकी जो है वो लॉसेस भी जो है वो उस हिसाब से कम हो जाते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि पावर ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से। तो ये दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हम पावर को जब दोबारा एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क हम जब पावर को स्टेप डाउन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो हम कोई हमें ज्यादा लॉसेस नहीं उठाने पड़ते। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर बेसिकली ये तो ठीक है, क्लियर होगा सर। सर आपने बताया दो चीज़ें हैं, एक है एसी ट्रांसमिशन और एक डीसी ट्रांसमिशन। इनके दरम्यान हम सर डीसी एसी हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टेप और स्टेप डाउन का इसमें हम सीक्वेंस रखते हैं, और जो डीसी करते हैं उसमें क्या होता है सर। और दूसरा ये कि सर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ACCR टाइप केबल इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील इन्फोर्स्ड। सर उसके अंदर जो इसका बेसिकली एडवांटेज क्या है, और उसके अंदर जो हम स्टील की वायर इन्फोर्स्ड उसके अंदर करके और एल्युमिनियम को रैप करते हैं, तो सर उसको रैप करना या उसके अंदर स्टील की वायर डालने का क्या मकसद होता है? अच्छा, नॉर्मली कोशिश क्या करें कि एट द सेम टाइम एक वक्त के अंदर एक सवाल पूछें, क्योंकि नॉर्मली वो पे सवाल भूल जाते हैं। पहले सवाल का मैं आपका जवाब देता हूँ, एसी और डीसी सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ पर। एसी को तो हम चलो पाकिस्तान के अंदर एसी सिस्टम, या पुराने वक्तों के अंदर कुछ 20 से 30 साल पहले चले जाएं आप, तो तकरीबन हर जगह एसी सिस्टम इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि हम इसको इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर पहले 20 साल पहले 30 साल पहले एसी सिस्टम इस्तेमाल होता था, सिर्फ इस वजह से कि ये स्टेप अप और स्टेप डाउन हो सकती है थ्रू ट्रांसफार्मर। डीसी हम ट्रांसफार्मर को नहीं दे सकते हैं और वो स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं हो सकती है। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने इवॉल्व किया है और हमारे पास बक बूस्टर और ये जो कन्वर्जन आ गए हैं पावर के, जिसको हम डीसी पावर को एफिशिएंटली ट्रांसफार्मर कर सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल के जरिए, तो तब से हमारे पास डीसी सिस्टम भी इन हो गया। क्योंकि बाकी सारे एडवांटेजेस हमें डीसी सिस्टम के हैं, उसमें लॉसेस कम होते हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट है हमारे पास जो कि एसी सिस्टम के नुकसान आते हैं। लॉसेस इसमें मेन फैक्टर हो गया या और चीज़ें हैं, तो डीसी सिस्टम इज बेटर। लेकिन सिर्फ डीसी सिस्टम का एक नुकसान है कि उसको इफेक्टिवली स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एसी सिस्टम अडॉप्ट यूज होता आ रहा है हमेशा से। और पाकिस्तान के अंदर भी यही वजह है कि सारे एसी सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन recent advancement in power electronics, some developed countries like China, America and Japan have switched to their extra high voltage transmission system to DC system, because with the advent of the conversion that can effectively convert the voltage, DC voltage, from one level to another level. Because previously that was not possible to effectively or efficiently convert the one voltage level to other voltage level in DC system. But when it is possible effectively, then they have shifted their extra high voltage and ultra high voltage system to DC system. But in Pakistan, currently there is no DC transmission system. There is only AC transmission system, due to the fact that we have not have extra budget to change our AC system to DC system. सो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपका क्लियर हो गया कि एसी और डीसी सिस्टम में क्या फ़र्क है और हम क्यों एसी या डीसी को क्यों प्रेफर करते हैं। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन के पहले मुझे बताएं, क्या कोई है? Sir, got it. Sir, how we can convert AC from DC from one level to another level? दैट इज नॉर्मली विद द एडवांसमेंट्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके जो बक बूस्टर के जो सर्किट्स बने हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या जो नॉर्मली आपके घरों के अंदर भी आप देखेंगे, ये सोलर सिस्टम के अंदर भी एक वोल्टेज से दूसरे लेवल के अंदर ये स्विचिंग हम करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपने हाफ नेटवर्क ब्रिज या फुल नेटवर्क ब्रिज पढ़ा होगा, उसी की एडवांस फॉर्म है जिसके जरिए हम डीसी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक कर सकते हैं। लेकिन ये अभी भी स्टिल भी अभी इतना एफिशिएंट नहीं हुआ। इसकी कन्वर्जन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल, इसके अंदर लॉसेस ज्यादा आ जाते हैं हमारे पास। जबकि ट्रांसफार्मर, आपको पता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर है वो मोर देन 99% एफिशिएंटली एक लेवल से वोल्टेज को दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। जबकि जो अदर हैंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बक बूस्टर हैं ये इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है अभी। लेकिन रिसेंटली कुछ एडवांसमेंट आई है कि ये भी इफेक्टिवली हो गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क स्विच हो रहा है डीसी की तरफ। और कोई सवाल इससे रिलेटेड, एसी डीसी से रिलेटेड? Okay, sir. अच्छा, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? Sir, basically we transmit our power or distribute our power with the help of ACCR cables. Sir, अच्छा ठीक है, एल्युमिनियम कोट क्यों होता है उसकी वजह से? ठीक है, उसका मैं आंसर देता हूँ आपके पास कि ACSR नॉर्मली मैंने बताया कि हमारे पास जो एसी पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं, एसी पावर के अंदर करंट ड्यू टू स्किन इफेक्ट सरफेस पे फ्लो करता है। जो केबल है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस पे ज्यादा करंट फ्लो करता है एज कंपेयर टू द मिडल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो और दूसरा स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। एल्युमिनियम की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर हवा चल रही है, तेज हवाएं जब चलती हैं तो केबल के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर स्ट्रेस आता है बड़ा। तो दो कामों की वजह से उसके अंदर हम स्टील इन्फोर्स्ड जो है वो ACR कंडक्टर बनाते हैं कि स्टील की वजह से स्ट्रेंथ आ जाती है उसके अंदर, स्टील की बड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम।
और उसके इर्द गिर्द हम एल्युमिनियम के जो है वो रैप कर देते हैं ताकि करंट ने तो फ्लो आउटर सरफेस पे ही होना है, तो आउटर सरफेस के ऊपर उसको जो है वो रेजिस्टेंस कम मिले, इस वजह से आउटर सरफेस पे एल्युमिनियम लगाते हैं और सेंटर के अंदर हम स्टील गुजार देते हैं, दो पर्पस की वजह से, क्योंकि करंट ने मिडल में से गुजरना नहीं है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, और दूसरी रीजन के स्ट्रेंथ आ जाए उसके अंदर। जी ओके सर, थैंक यू। कोई और सवाल किसी और का? Any other question related to substation? Okay, let's move to our next topic, that is distribution substation. And that is a power that are distribution substation. Distribution substations are normally located at the end of sub-transmission network that converts the high voltage to a relatively low voltage, and that can be fed to our consumer or utilization sector. The main difference between substation and distribution substation is that substation can be used in substation, a step down transformer or a step up transformer can be used, but in distribution substation that are normally located at the end of the sub transmission network, they are only used step down transformer that usually converts the high voltage to a relatively lower voltage so that we can feed this lower voltage to our distribution transformer, and through distribution transformer we can feed our customers as well. And these are written just the voltage level. In Pakistan, the distribution substations are normally 33 kilovolt and 66 kilovolt, but in some other countries that might be 34.5 kilovolt or something like that. And in transmission network, we have three-phase, three-wire system, and for a distribution network, we have three-phase and four-wire system. We have three wires for three phases: phase A, phase B, phase C, or phase 1, 2, 3, and the fourth wire is for neutral. So there our distribution system is three-phase, three and four-wire system. The fourth wire conductor is off for neutral or a ground wire. And from the distribution substation, our power is distributed to our utilization sector. And utilization sector, we have residential colonies, we have commercial markets like shops, and in the industry we have different factories that utilize the electrical energy in bulk, etc. So distribution substation normally deals with relatively low power and low voltage, and the substation is used for high power and high voltage, and substation can be used to step up or step down the voltages, but distribution substation is normally used to only step down the voltages and to feed our electrical power to utilization sector. Any question here? So now let's go over the main topics of our today's lab, that are the components of distribution substation. Now you know that what is distribution substation. Now next we would study the different components that are used in distribution substation and their function as well. So let's move towards our main topic. जी पूछे सवाल को, क्या? any question? सवाल ये था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, इसमें ये जो हमारे होता है लोकल शहरों में होता है 11 केवी का जो पुलिस स्टेशन होता है, इसमें ये आता है? जी बिल्कुल, नॉर्मली जो आपको शहरों के अंदर, आपके तकरीबन हर शहर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता ही है। तो नॉर्मली ये जो आपको मिलता है वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है डिफरेंट, जो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर या डिफरेंट जो लोकेलिटीज़ हैं यहाँ पर आपको मिलेगा ये। एनी क्वेश्चन? सर दूसरा ये कि मसलन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं या सब स्टेशन होते हैं जहाँ पे इनके मेन इक्विपमेंट्स या जो यार्ड होता है वो बेसिकली इन्होंने कच्ची ज़मीन का बनाया होता है। अदरवाइज दूसरा इनका देखें जहाँ पे इनके वो रिलेस लगी होती हैं, जहाँ पे इनके मसलन कैपेसिटर बैंक रखे होते हैं इधर, वो इन्होंने कंक्रीट की बनाई होती है। तो इसमें क्या मसलन कच्ची ज़मीन और उधर पक्की की होती है, तो ये इसका क्या इंटरप्रेट है?
ईच कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के अंदर अभी बारी बारी हम कंपोनेंट पढ़ेंगे कि उसका क्या पर्पस या क्या फंक्शन है। तो जो कंपोनेंट आपने लगाया हुआ है कुछ को जो है वो स्टिफनेस या फेयरनेस चाहिए होती है, तो उनके लिए वो कंक्रीट का जो है वो प्रॉपर बना देते हैं। कुछ को जो है वो प्रॉपर ग्राउंडिंग चाहिए होती है, या कुछ के अंदर ये होता है कि पानी जब जाए तो उसके अंदर बारिश वगैरह हो तो उसको मुतासिर नहीं करती, कुछ कंपोनेंट्स को वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए पत्थर वगैरह के अंदर। कुछ के अंदर ग्राउंड, कुछ इक्विपमेंट को जो है वो बेटर ग्राउंडिंग या अर्थिंग चाहिए होती है हमारे पास, तो उनको और तरीके से डील करते हैं। ये हर इक्विपमेंट के ऊपर डिफरेंट है कि वो इक्विपमेंट किस पर्पस के लिए बना हुआ है, उसका क्या पर्पस है, तो उसकी बेस आपने कैसी बनानी है। तो वो हर जो कंपोनेंट आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो फिर आप उसको साथ साथ जो है देखेंगे कि उस कंपोनेंट का क्या पर्पस या क्या मकसद है, कि उसकी बेस जो है वो कैसी बनाई जा सके, कि उसको कंक्रीट का बनाया जाए या उसको जो है वो कच्चा रखा जाए या उसके ऊपर जस्ट पत्थर डाले जाएं। वो डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट का क्या पर्पस है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट पर्पस है, तो उसके लिए उसकी बेस भी डिफरेंट उसी हिसाब से बनाई जाती है। जी, और कोई सवाल? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन से सबस्टेशन होते हैं ये अंडरग्राउंड हो सकते हैं? नॉर्मली अंडरग्राउंड नहीं होते हैं, क्योंकि हमें फायदा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिला वजह कॉस्ट बढ़ाने की क्राउंड करके अंडरग्राउंड खोद के उसके, या तो सारा का सारा सिस्टम ही आपके पास अंडरग्राउंड बना हो तो वो है, लेकिन नॉर्मली जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। उल्टा नुकसान है कि अंडरग्राउंड करके पानी जमा होने का खर्चा है, ग्राउंडिंग के जीरो पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड आपको करनी पड़ेगी और बहुत तरह के मसले मसाइल आएंगे, तो अंडरग्राउंड बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं होते अंडरग्राउंड। ना, क्योंकि जो न्यूट्रल वायर होगी उसका इफेक्ट होगा ये अंडरग्राउंड में, क्योंकि सर जो आउट ऑफ कंट्रीज होते हैं वो अंडरग्राउंड ही होते हैं ज्यादातर। अंडरग्राउंड उनका पर्पस वो डिफरेंट है, वहां पर अंडरग्राउंड होने की रीजन और है, पाकिस्तान में और है, बाहर के ममालिक में इस वजह से अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड अपना सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, सबवेज हैं, रेलवे सिस्टम्स हैं, वो सारा उनका अंडरग्राउंड होता है। और इसी वजह से वो अंडरग्राउंड केबल के लिए जब खुदाई करते हैं सारी की सारी, तो उनकी सारी केबल्स और सारी चीजें वो उसी टनल्स के अंदर से जो है वो गुजर जाती हैं। हालांकि उसका मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस जो है ट्रांसपोर्टेशन है अंडरग्राउंड की, सबवेज के जरिए या ट्रेन के जरिए या हाई स्पीड रेलवेज के जरिए, लेकिन साथ ही जब जब खुदाई करते हैं तो उसके साथ ही अपने सिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी अंडरग्राउंड ही बना लेते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो, अगर स्पेशल आप इस पर्पस के लिए पाकिस्तान के अंदर ये काम करेंगे जहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम या इस किस्म की चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और दूसरी बात रही कि ग्राउंडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा या उसका करेगा, तो ग्राउंडिंग करने का एक अलग तरीकाकार है और उसके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम अंडरग्राउंड जाकर सबस्टेशन को बनाएं। हम ग्राउंड के ऊपर भी बना सकते हैं और ग्राउंडिंग को प्रॉपर हम कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर भी, क्योंकि उसका एक अलग मैकेनिज्म है ग्राउंड करने का। उसको तो हम पर्टिकुलरली 6 से 8 फीट हम खुद जो है वो रॉड डाल के ग्राउंडिंग करने का डिफरेंट एक मैकेनिज्म है, उसको हम करते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है अंडरग्राउंड जाने की, उनका पर्पस बाहर के ममालिक में डिफरेंट है, तो वो इजीली ताकि एस्थेटिकली गुड रखें। यहाँ पे तो सारी की तारें आपको नजर आती हैं कि बाहर की बाहर जो है वो मूव कर रही हैं, ज्यादातर जो है वो आपको पता है कि टावर्स स्ट्रीट्स में, गलियों में, रोड्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो ऊपर से ही तारे सारी की सारी हमारे पास जो है वो घूम रही हैं। तो वहां पर तो एस्थेटिकली भी है कि वो चीजें तो नहीं कर सकते फॉर सेफ्टी पर्पस, लेकिन इसकी कॉस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा आती है कि स्पेशल इस पर्पस के लिए हम डिगिंग करके अंडरग्राउंड सिस्टम सारा नहीं कर सकते हैं। उनका तो पर्पस डिफरेंट है, तो वो साथ में ये काम भी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर हम अंडरग्राउंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी, और कोई सवाल? ठीक है सर। Okay, let's move to our main topic, that are components of distribution substation. Now we would study one by one not all the, but all the basic components that are usually installed in distribution substation. Number one, that is supply line. Basically, supply line is the feeder point of any substation that takes power from the sub-transmission system and feeds the distribution substation. So every distribution substation has to be fed by at least one supply line. And for better reliability purpose, sometimes there are more than one supply lines, maybe 2 or 3, to increase the reliability, because for any instant, if one supply line is damaged or becomes faulty, then the other supply line can provide power when one or other supply lines may get damaged. So supply line can be thought as a feeder or a primary feeder, which feeds the distribution substations from the sub-transmission network. That is called the concept of supply lines. Okay.
and these are usually connected with distribution substation with some disconnecting switches, so that in case of maintenance or in repair work or in fault work, you can disconnect the supply lines from the distribution substation and can perform the maintenance or repair work in the distribution substations. Any question here? These are the supply lines, incoming subtransmission lines that are coming from the subtransmission systems. So these lines are called the supply line or the primary feeders. You can say that. The next is power transformer. The most important component or the main component of distribution substation is power transformer. But I say that that is the only one component that do the work, because the purpose of substation is to step up or step down the voltages, and the purpose of distribution substation is to step down the voltage, and that work is done by power transformer. The purpose or the main purpose of power transformer is to step down the voltages. So that is the very important component, and that is the only component you can say that is required, because it is doing main work, converting the high voltage into the lower voltage. All other components are associated with this power transformer to facilitate it or to protect it or to measure the power or other things like that. But the main component is power transformer. All other components, circuit breaker, fuse, isolator, switch gear, and all other components are usually installed to protect power transformer. This is the most expensive and most important component of distribution substation. And normally at least one power transformer is required. One three-phase power transformer is required, because our transmission and distribution network are three-phase, but you can use 3 single-phase transformer as well for the same purpose. And to increase the reliability, you can use more than 2 transformer, so that in case of fault or in case of maintenance, your outage would not happen, and you could provide the power seamlessly to your end user. And depending upon different factors, power transformer can be classified by different factors, like power rating. Power rating means how much power a power transformer can handle, like 100 MVA or a 250 MVA or a 500 MVA or a 1000 MVA, how much power it can handle. And that is not simple transformer, because normally you can say that transformer is any component that can step down or step up the voltages. Normally in your homes you have a transformer for some Japanese equipment like Japanese heater. You have a converter that converts the 220 volt voltage into 110 volt voltage. That is also a transformer, but that is not a power transformer. Power transformer is a term used for a transformer that can handle a power in megawatt as well, MVA as well, that 100 MVA, 250 MVA, 1000 MVA. So that is the difference between a normal transformer. A normal transformer can step up or step down voltages, but not in bulk. But a power transformer is a device or is a thing that can handle huge power. Similarly, they can be classified in the level of insulation or a voltage rating, like how much high voltage it can handle. That some power transformer can handle convert 33 kilovolt to 11 kilovolt or a 66 kilovolt to 11 kilovolt. Some transformer can handle 500 kilovolt and convert these 500 volt to 132 kilovolt. So depending upon the voltage rating or the voltage level, these transformers are classified, because higher the voltage, higher the insulation level would be required, and higher would be its cost. So normally transformers are also classified due to their insulation or voltage rating. Similarly, in a higher level of power transformer, there must be some cooling mechanism that is air cooled transformer or a water cooled transformer and other things. Similarly, the winding connection is a star or a delta connection. And similarly, there are some auto transformer that can regulate the
voltage depending upon our end consumer, because our due to some transmission effect, our voltage may get deviate from the rated voltage. So voltage regulation can be provided by the transformer using the taps which can regulate the receiving side voltage and can provide the customer voltage at the rated value. So these are the some things on which the different transformer can be classified. Any question here related to power transformer? Okay, next is bus bars. Normally, bus bar is just a piece of solid conductor which is used to connect different joints of electrical connections. Because in substation you have to distribute power to different feeders or different outgoing feeders and from different incoming feeders. So they are joined together through some solid bar that has negligible or a minimum resistance, and that bar is called bus bar. That is just a piece of solid piece of conductor or iron, you can say that, or aluminum or anything like that, which have lower resistance, and it is just used to connect different oncoming or outgoing or incoming feeders. So bus bar is just a solid piece of conductor. It can be a long rod or a bar or a square conductor or solid conductor, but the main thing is used to connect different incoming lines or outgoing feeders to a single point. These are the bar shows in the figure. These bars or a rod are called bus bars, and their function is nothing but to attach different conductors or points to a single point, so that a single bus bar can provide power to multiple paths, like one path is this, another path is this, and other path is this, multiple points. So that is the concept of bus bar. Any question here related to bus bar? Okay, next is the switch gear. Normally, switch gear is not a single component, but a group of different components that includes circuit breaker, disconnecting switches, bus conductors, interconnecting wiring, supporting structures, some devices for just like a voltmeter and ammeter to measure the to measure and control the circuit, to measure the voltages, current, frequency, and other thing like that. So switchgear is not a term that is used for a single component, but it is a group of component, and that group of components includes the devices that are used for switching and controlling and monitoring of electrical devices or electrical. So that is the picture of a switchgear, in which there are some meters like voltmeter, ammeter, power meter, frequency meter, phase meter, and other meters like to measure the to measure your power, and some switch, like these switches are disconnecting switches or circuit breaker or other thing like that. So switch gear is a combination of all these things that are normally installed in a you can say that in a bucket or in Almira, etc. So these are components are combined together, and these all group of component is called a switch gear in with its structure as well. Any question here? सर स्विच गेयर्स के अंदर सर बेसिकली रिलेज इस्तेमाल होती हैं और इसके अंदर वोल्टमीटर एमीटर इस्तेमाल होता है सर. इसकी स्विचिंग भी रिलेज से कंट्रोल की जाती है पूरे सिस्टम की या किसी स्पेसिफिक एरिया की. तो सर रिलेज की या फिर इसके अंदर जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग होती है तो उसकी कोडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? और सर इसके अंदर मसलन ये ज़्यादातर मैंने एक जगह देखे थे सीमेंस के हैं, तो इसके अलावा कौन सी कंपनीज के हम मसलन कौन सी कंपनी बनाती है, और अगर कंपनी टू कंपनी डिफर करने से इनकी लैंग्वेज की जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है? बिल्कुल. रिले आजकल, पहले ज़माने में रिलेज डिफरेंट आती थी. आज से जस्ट अगर आप डिकेड और 2 डिकेड पहले की बात करें तो हमारे पास मैनुअल रिलेज आती थी जो कि इलेक्ट्रिकल्स की लाइक करंट और वोल्टेज के ऊपर एक्चुएट होती थी. ठीक है, लेकिन आजकल हमारे पास न्यूमेरिक रिलेज आ रही हैं जिनके अंदर करंट और वोल्टेज को मेजर करने के बाद उनसे एक ही रिले लगती है जो कि सारी चीज़ों को जरा करंट और वोल्टेज लेने के बाद मेजर करने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है और मल्टीपल प्रोटेक्ट
डिवाइसेस उसके अंदर कोडिंग करके हम जो है वो चला सकते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट किस्म की रिलेज आ रही हैं, डेफिनेटली हर कंपनी अपनी कोडिंग पर्पस यूज कर रही है, तो वो प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हुए वो न्यूमेरिकल, क्योंकि जब आपने ये सारी की सारी उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर एक लगा होता है हमारे पास, जो कि सारी इनपुट जो हमारे पास वोल्टेजेस करंट्स वगैरह आ रही होती हैं उसको मेजर करता है और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है कि जब वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए, करंट इससे ज्यादा हो जाए, ये इससे कम हो जाए तो ये हो जाए, वोल्टेज इस रेंज में आ जाए तो ये हो जाए, करंट इस रेंज में आ जाए तो ये एक्चुएट हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए। तो ये सारा काम कोडिंग के जरिए होता है और कोडिंग के अंदर कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो है वो चिप या माइक्रो प्रोसेसर जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो कंट्रोलिंग कर सकता है। तो कोई भी कंपनी जिस तरह से सिमंस हो गया या दूसरी जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो है वो आ रही हैं जो इस किस्म की न्यूमेरिक रिलेज जो है वो बना रही हैं लेटेस्ट, जो कि मल्टीपर्पज रिलेज भी कहलाती हैं, जो कि मल्टीपल काम कर रही होती हैं। वो सारा वो रिले का काम होता है। स्विच गियर के अंदर भी एज सच नॉर्मली स्विच गियर के अंदर स्मार्ट रिलेज नहीं लगी होती हैं, स्विच गियर के अंदर जस्ट मेजरिंग एंड कंट्रोल के लिए जो है वो कुछ इक्विपमेंट जो मैंने बताया ये चीज़ें हमारे पास जो है वो लगी होती हैं। रिलेज ज़्यादातर जो है वो जो न्यूमेरिक रिलेज है उसके अंदर कोडिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। तो सर बेसिकली जो हम अभी जो स्टेशन की जो सबस्टेशन होता है या एंड हीट डीसी है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर्स हैं या इनके जो इंटरकनेक्शन है वो उसके लिए हम लैडर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं या पीएलसी स्काडा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसके अंदर जो आप आपने बोला माइक्रो प्रोसेसर का, तो माइक्रो प्रोसेसर की एक फील्ड और एक केस की कोडिंग टोटली डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू पीएलसी या पीएलसी स्काडा सिस्टम। तो इसके अंदर सर वो सिस्टम है या इसके अंदर वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलिंग सिस्टम है? मैंने आपको वही बताया कि दोनों सिस्टम्स हो सकते हैं, दोनों ही चल रहे हैं और दोनों की आपने वही बताया कि टोटल लॉजिक और प्रोग्रामिंग दो क्या जितनी लैंग्वेजेस कर लेंगे वो टोटल उससे डिफरेंट होगी। तो ये जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए ये चीज़ बना रही हैं। मेनली मैं पर्पस बता रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है न्यूमेरिक रिलेज का, कि मल्टीपल एक बार इनपुट सारे करंट वोल्टेजेस आ गई तो आप मल्टीपल डिसीजंस ले सकते हैं। नॉर्मली जो पहले सिंपल रिलेज आ रही हैं जो कि मैकेनिकल रिले जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जस्ट एक होता है कि करंट बढ़ गया तो चलो जी ये ऑपरेशन हो जाए बस। इसके अंदर लेवल भी आप बना सकते हैं और सारा रिकॉर्डेड भी हो सकता है, सारे इसके अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है, कितना करंट जा रहा है, कब किसने क्या डिसीजन लिया, ऑटोमेटिक रिक्लोजर हो सकता है, इतने टाइम के बाद हो सकता है, एक बारी फॉल्ट आए तो उसको चेक करे तो ये एक्चुएटिंग सिग्नल ये भेजे। इसके बिहाइंड कोई भी लॉजिक या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो सकता है जो कि फिक्स्ड नहीं है कि आप कह लें कि भाई यही इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी उसके अंदर हम चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डिफरेंट हो भी रही हैं। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट अपने वो यूज़ करते हुए वो मार्केट के अंदर वो चीज़ जो है वो दे रही है। किसी की कॉस्ट ज़्यादा है तो उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, किसी की फंक्शनैलिटी कम है तो कॉस्ट भी जो है वो उसके हिसाब से कम है। तो वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे क्या कॉस्ट के पैरामीटर्स क्या रिक्वायर्ड है और आपको कितनी प्रोटेक्शन या कितनी रिलायबिलिटी चाहिए या कितना मैकेनिज्म आपको चाहिए या कितना। नॉर्मली ये सारा कंसेप्ट स्मार्ट ग्रिड की तरफ जा रहा है जहाँ पर ऑटोमेटिक तरीकों से कंट्रोल किया जाए या ज़्यादा जो है वो कंट्रोल हासिल किया जा सके अपने पावर सिस्टम के ऊपर, लेकिन इसकी कॉस्ट भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो जितने ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ डालेंगे या जो उसकी डालेंगे तो उसके हिसाब से फिर कॉस्ट भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा आती है। तो वो रिले के अंदर डिफरेंट किस्म की हैं रिलेज वगैरह। और कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, रिलेज का कंट्रोल्स भी क्या स्विच गियर सिस्टम में होता है? दोबारा पूछिए। क्वेश्चन रिपीट करें जरा। सर क्या रिलेज का कंट्रोल्स भी स्विच गियर सिस्टम में ही होता है? रिले एक नॉर्मली अलग कंपोनेंट है, लेकिन इसके ज़रूरी नहीं है। रिले के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। अभी रिले को भी हम आगे चलकर जो है वो स्टडी करेंगे रिले का क्या है। रिले का भी काम कोई सिंगल नहीं है, रिले के भी मल्टीपल काम हो सकते हैं। रिले की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके देखेंगे कि वो है क्या। तो रिले इसके अंदर मौजूद हो भी सकती है और इसके बाहर भी मौजूद हो सकती है, क्योंकि ये भी स्विच गियर के अंदर भी इसका रिले का काम है, लेकिन रिले का काम और भी बहुत सी जगहों के ऊपर है। तो इसके अंदर भी रिले हो सकती है और इसके बाहर भी रिले हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या काम लेना चाह रहे हैं आप उससे। जी और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज आउटकमिंग फीडर्स। Similarly, as we have incoming feeders that we called as the supply line or the primary feeders, we have
outcoming feeders as well. The purpose of outcoming feeders is to feed the power from substation to the point of services, or different you can say that feeders, etc. And these feeders can be overhead or underground as well, but I have told you earlier that the overhead we have used conductor, and for underground system we would use cables, etc. For the distribution of power from the distribution substation to the consumer end side. And in urban areas we have the underground system, and in rural areas and some old cities, or we have suburban areas, we have overhead outcoming feeders as well. So these are just the lines, you can say, that leave the substation, and the purpose of outcoming feeders is to transfer the power from substation to different feeders through some outgoing lines. Any question related to outcoming feeders? The next is circuit breakers. Circuit breakers are also a very important part of substation, and the main function of circuit breaker is that they can automatically break or close the circuits, and manually as well. They can break the circuits automatically under any faulty condition, sensing the fault, and they can be operated manually to close or open the circuit. But its functionality should be that it must be capable of automatically opening the circuit in case of fault by detecting the overload current or overload voltage, and it's prevent the equipment from damaging. The another function that is associated with circuit breaker is the arc quenching mechanism, because in substation we have higher value of current that is flowing between different conductors of the flowing in the conductors of the transmission line. That current is very high, and when you break the circuit, an arc started that must be contained, cooled, and extinguished and quenched in a controlled way so that fire or spark doesn't occur. If the arc quenching mechanism is absent, then there would be an eruption of fire, and that can cause the initiation of fire. So another very basic function of circuit breaker is the arc quenching mechanism, and that arc quenching mechanism can be in the form of vacuum or air or SF6 gas or a oil or other thing like that, but that mechanism is must in circuit breaker. And these circuit breakers that are used in substation are not like a circuit breaker that you have seen in your homes and in your houses that are called miniature circuit breaker. The circuit breaker that are used in substation are like that, a huge SF6 or a oil immersed circuit breaker that are having a must have an arc quenching mechanism. In homes we have miniature circuit breakers in which the arc is produced, but that arc is not very of high current, so that arc is quenched by air itself. But the arc that is produced in substation due to very large current must be quenched by some external mechanism like vacuum or an air blast or some insulating gas like SF6 or oil, etc. To quench that particular arc. And if that arc quenching mechanism is not present in circuit breaker, then fire may erupt and can cause damage to the substation. Any question here related to circuit breaker? Next is the fuse. Normally fuse can be used in home as well, but the basic function of fuse is the wire or a fusible link through which the whole circuit current is flowing through that fusible link. It is designed in such a way that in normal operation and for a normal current, the heat produced in this link
is easily dissipated in the surrounding area and it doesn't melt. But as the current increases, the heat dissipation would be so large that it melts the fusible link. Suppose we have a circuit breaker that a normal operating current of 100 ampere. So when 100 ampere pass through its, the heat produced in this fusible link is such that it can easily dissipate in the surrounding. But when the current reaches the value of 300 ampere or a 500 ampere or any value that we have set for it action, then at that particular value of current, the heat produced is so much that it melts its fusible link. So fuse operates in such a way that is also for our current protection normally, and they cannot be operated manually. They can only be operated automatically and must be replaced before second operation. These are not like circuit breaker that when the circuit breaker is operated, it just open the circuit, and after removing the fault, you just have to manually close on the circuit breaker again. But for a fuse, you have to replace that fusible link again and again every time it smelts. Any question? सर ये जो आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म है ये खुद ब खुद रिटेन हो जाता है या दोबारा इसको फिर रिटेन करना पड़ता है? ये खुद ब खुद ही रिटेन हो जाता है। लेकिन एक एग्जांपल मैं सर्किट ब्रेकर की आपको जो है वो देता हूँ। लेट्स सपोज कि आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म SF6 गैस का जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि SF6 गैस इज इनर्ट गैस जो कि रिएक्शन नहीं करती है, और आर्क का मतलब है फायर, आग या आर्क या फायर या आग, इसको जलने के लिए या रिटेन रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क क्वेंचिंग, जहां पर दो हमारे पास उसके जो पार्ट्स हैं जो कि अलग हो रहे हैं, जिनके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रही है या वो आग प्रोड्यूस हो रही है, उसको जलने के लिए या रिटेन रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर उसके अंदर हम इनर्ट गैस को फिल कर देंगे लाइक SF6 गैस, तो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आर्क जो है वो खुद ब खुद ही बुझ जाएगी। और उसको एवरी टाइम जब फिक्स किया हुआ है उसके अंदर, जब तक गैस लीक नहीं होती है, तो जितनी मरतबा भी उसका जो है वो दो जो उसके कनेक्शन पॉइंट हैं वो हटेंगे और उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होने की कोशिश होगी, तो वो उससे जो है वो जलने नहीं देगी, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। आर्क को जलने के लिए या रिटेन रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन निकाल कर आप उसके अंदर वैक्यूम भर दें या इंसुलेटिंग गैस भर दें या SF6 गैस भर दें या ऑयल भर दें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आर्क नहीं चलेगी, रिटेन ही नहीं रह सकती है। समझ आइए? ठीक है, ठीक। सर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा फिर? किस सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस की बात कर रहे हैं आप? सर्किट ब्रेकर की भी डेफिनेशन बताई है और फ्यूज की भी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सर्किट ब्रेकर और फ्यूज की बेसिक डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी मैंने बताया कि मेन जो पर्पस है सर्किट ब्रेकर का, ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है और मैनुअली भी, जबकि फ्यूज हमारे पास सिर्फ ऑटोमेटिकली हो सकता है, इसको मैनुअली आप नहीं कर सकते ऑपरेट। ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर है इसे बार बार ऑपरेट और टर्न ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है। जो फ्यूज है वो एक ही बारी जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ही बारी अंडर फॉल्टी कंडीशन एक ही बारी ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो ऑपरेट हो सकता है हमारे पास जो है वो। तो ये डिफरेंट है सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के अंदर हमारे पास। और नॉर्मली फ्यूज हमारे पास रिलेटिवली लोअर वोल्टेजेस और लोअर करंट के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़े से हम वोल्टेज को बढ़ा दें या करंट को बढ़ा दें तो वहां पर फ्यूज हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता। ये भी सब स्टेशन के अंदर रेयरली यूज होता है, क्योंकि सब स्टेशन के अंदर भी वोल्टेजेस 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट तक होती हैं, तो वहां पर भी इसका काम नहीं होता। जहां पर वोल्टेजेस कम है या करंट कम है, या जहां पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जहां पर वोल्टेजेस थोड़ी सी बढ़ गई या करंट थोड़ा सा बढ़ गया, वहां पर हम सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं, और यही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और कोई सवाल हो यहाँ पर? एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? Okay, the next part is isolator. Isolator is also like a switch that are used to open or close or electric circuits, but that can only be operated at no load.
So that is also a type of a switch like circuit breaker that can be that can make connection open or short, or you can make it for electrical connection. But the main difference between isolator and circuit breaker is that you have to operate isolator in no load condition. And when isolator operates, it's a mechanical switch and it must be mechanically operated. It doesn't operate automatically. And in normal or full load condition, it doesn't operate because it doesn't have any arc quenching mechanism. So if you mistakenly operate it at full load, arc would initiate and there would be no mechanism to quench that arc. So fire would erupt. So it is very necessary to use that isolator in no load condition. Means first you have to operate the circuit breaker. When circuit breaker breaks the circuit, then you have to use the isolator switch. Okay. But the question is, when you have already opened the circuit with the help of circuit breaker, then what is the need of that isolator? The answer is for two reasons. सर वो स्पार्किंग होगी ना सर, वो स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए चार्जिंग की स्टोरेज की वजह से नहीं। सुन ले आंसर, मेरा आंसर अभी तक सही नहीं आया किसी का। दो रीजंस की वजह मैंने बताया कि भाई सर्किट को ओपन करने के लिए आइसोलेटर भी इस्तेमाल होता है, सर्किट ब्रेकर भी। सर्किट ब्रेकर को तो आप नो लोड पे भी, फुल लोड के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, नो लोड के ऊपर भी। इसको सिर्फ नो लोड के ऊपर पहले सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है। जब सर्किट ब्रेक हो गया फिर आइसोलेटर को हम ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। रीजन इसकी दो है। देयर आर टू रीजन बिहाइंड दैट फिनोमेना। द फर्स्ट इज extra safety, because I have told you earlier that circuit breaker is a device that can be operated automatically or manually. It means if you are doing some safety work, or a personal or a person is doing some maintenance work on the substation or electrical equipment as well, and he have operated the circuit breaker manually in off position, circuit breaker mistakenly can be automatically on. And when it becomes on, the circuit would energize, and a personal or a person working on that electrical equipment for maintenance purpose might get shocked and electrocuted. So isolators are used for extra safety purpose because they cannot be operated automatically. They can only be operated manually. So it doesn't operate automatically and close the circuit. So, and other thing is that normally circuit breakers are enclosed, and its both connection points are not visible from the outside because it is enclosed in some assembly. So it is not possible to see that it is either on or in off position, although there are some indications, but these indications can be malfunctioned. And if a circuit breaker is malfunctioned, it means the person working on electrical equipment would be electrocuted. So it provide the isolator can be seen from outside that it is open. So it can be physically seen from the eyes that it is open, and it cannot be automatically closed. So it provides extra safety to the personnel or the person operating on that particular electrical equipment. So that is additional point. But the main precaution is that you cannot operate isolator at full load. You must operate isolator after the circuit breaker, because if you operate the isolator at full load, arc would initiate and fire would erupt because there is no arc quenching mechanism in isolator. Any question here? The next is the earthing switch. Earthing switch are the switches that dislocate or earth the extra charges that are present in the transmission line due to capacitive effect. First, we operate the circuit breaker to open the circuit. Then we
open the circuit with isolator for extra safety, but still we cannot work on electrical conductors or equipment, etc., due to the straight charges that are present due to the capacitive effect, and these charges are enough to electrocute or shock a person working on that particular transmission lines or equipment. So to discharge these stray charges due to the capacitance or the capacitive effect of transmission line, it is necessary uh, to discharge these trapped charges to earth, and that work is done through earthing switch, so that the person working on electrical equipment or electrical wires can be saved from any stray charges or etc. Any question here? सर नहीं सर, आप ये static काइंडली रिपीट कर दें, आपने क्या बताया था डिस्चार्ज का? अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपने कोई सेफ्टी का काम करना है या आपने कोई करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते हैं सर्किट ब्रेकर को जो है वो ओपन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें फुल करंट गुजर रहा होता है, आर्क प्रोड्यूस्ड होती है, सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म होता है, वो उसको बुझा देता है। देन फिर आप क्या करते हैं कि आइसोलेटर के जरिए फिजिकली आप उसको कनेक्शन को ओपन कर देते हैं। वो हमें नजर भी आ रहा होता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है कि ऑटोमेटिक तरीके से बंद नहीं हो सकता, तो पर्सन सेफली उस पर काम कर ले। लेकिन बंदा अभी भी काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई भी पर्सनल वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट we have stray charges that is stuck in transmission lines. To discharge these trapped charges, earthing of these charges is necessary. That is done by earthing switch. So under normal conditions, first circuit breakers and isolators are closed, but earthing switch is open. But for during fault or maintenance period, circuit breaker and isolators are open, but the earthing switch is closed for the discharging of trapped charges that are trapped in transmission lines due to the capacitive effect of transmission line. क्लियर हुई है बात ये कि नहीं? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आपको ये चीज का आइडिया है ना कि कैपेसिटिव इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्यों होता है और उसकी वजह से चार्जेस क्यों है? ये इसका आइडिया नहीं है तो फिर ये बात समझ में नहीं आ सकती। फिर मैं ये बात आपको समझाता हूँ। ये आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर कैपेसिटेंस होती है। यही वही तो बात ना, बेसिकली आप देखें ना कि जो हमारे पास कैपेसिटर बेसिकली चार्ज को स्टोरेज के लिए दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है। अब जो आप ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली कंडक्टर होता है, और कंडक्टर मसलन कंडक्टर और कैपेसिटेंस का एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो उसके अंदर चार्ज कैसे स्टोर होगा, और चार्ज अगर स्टोर होगा तो वो उसको डिस्चार्ज तो करवा देंगे अगर कैपेसिटर ही नहीं है तो। अच्छा, मेरी बात सुने, असल में ये कैपेसिटर होता नहीं है। आपकी बात ठीक है, कैपेसिटर इज अनदर थिंग। जो आपने पढ़ा हुआ है आपके ख्याल में कैपेसिटर ये होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइंस का जो एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर हाई वोल्टेजेस होती हैं। ये तो पता है, हवा के अंदर मैंने बताया कि एक कंडक्टर है जिसके ऊपर वोल्टेज है, और वो उसकी एक प्लेट एज अ एक्ट करती है, और जमीन जो कि जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, जमीन या अर्थ उसकी दूसरी प्लेट एक्ट करती है एज अ कैपेसिटर के तौर पर। और जो एयर होती है उस कंडक्टर के बीच में और अर्थ के बीच में, वो एक्ट करती है एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये एक बड़ा सा कैपेसिटेंस बना लेते हैं। हम खुद से लगाते नहीं हैं, हम खुद से बनाते नहीं हैं, ये एक्ट बन जाता है, खुद ही नेचुरली बन जाता है। कैपेसिटर की एक प्लेट बन गई कंडक्टर, दूसरी प्लेट बन गई अर्थ। इनके दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस है, और जो एयर बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ है ये एक्ट करती है एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये एज अ होल ट्रांसमिशन लाइन, एयर और अर्थ ये मिलकर एक कैपेसिटेंस बना लेती है नेचुरली। हम नहीं बनाते, लेकिन अनअवॉइडेबल है। ये अगर वोल्टेज कंडक्टर के ऊपर आएगी तो ये कैपेसिटर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वो कैपेसिटर बन गया तो उसने चार्ज भी स्टोर करना है अपने अंदर, और ये हाई वोल्टेज की वजह से ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है, और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी बंदा जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो उसके लिए हैजार्डस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें इन कैपेसिटेंस के स्ट्रे चार्जेस को डिस्चार्ज करना जरूरी है, और ये काम अर्थिंग स्विच के जरिए होता है, जो कि जस्ट हमारे पास जो है वो
एक स्विच होता है जो कि कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करता है। बल्कि नॉर्मली अगर आपने थोड़ा सा विजिट किया हो, जब भी आपके घर मोहल्ले के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस को या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की मेंटेनेंस के लिए आते हैं, उन्होंने एक जंजीर रखी होती है लोहे की। वो क्या करते हैं, जंजीर को लेकर ऊपर फेंकते हैं आफ्टर ऑपरेटिंग द सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर, और वो जंजीर को जो है वो जैसे कंडक्टर के ऊपर फेंकते हैं और दूसरा पॉइंट उसका ग्राउंड के साथ लगा देते हैं। ये इस पर्पस के लिए होता है कि वो जो उसके ऊपर चार्जेस, स्ट्रे चार्जेस होते हैं ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट, उसको ग्राउंड किया जा सके। और जब तक वो काम करते रहते हैं उसके ऊपर, वो जंजीर जो है वो कंडक्टर की वो अर्थ से लगी रहती है, जिसको आप अर्थिंग स्विच का नाम लें। अगर वो अर्थिंग स्विच नहीं प्रेजेंट तो ये जंजीर काम करती है एज अ अर्थिंग स्विच, जो कि स्ट्रे चार्जेस को डिस्चार्ज कर देती है अर्थ के अंदर या ग्राउंड के अंदर। और अगर कोई भी गलती से कोई स्ट्रे चार्ज उसके अंदर आता है तो वो बंदे के थ्रू करंट नहीं, बल्कि उस जंजीर के जरिए या उस अर्थिंग स्विच के जरिए वो चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाता है। क्लियर हुई है बात? क्लियर हो गया कंसेप्ट इसका? सर ठीक है, ये बात तो ठीक है कि मसलन कैपेसिटर बनने का कंसेप्ट कैसे बनता है, और मतलब एक फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में एयर होती है। सर अभी देखें कि अगर किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन है जो बड़ी है, ठीक है, उसके नीचे से अगर हम जा रहे हैं, तो ये तो अभी हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो फिर हम सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे, इंसुलेटर को ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और वो उसके अर्थिंग स्विच के जरिए वो उसके स्टैटिक चार्जेस हम ग्राउंड कर देंगे। सर नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेट्स सपोज कोई फॉल्ट नहीं है, सर्किट ब्रेकर भी ओपन है, आइसोलेटर भी ओपन है, तो मैं उस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से जाता हूँ, तो मैं उस चार्ज को फील क्यों नहीं करूँगा, या मुझे वो चार्ज फील क्यों नहीं होता उस टाइम पर? क्योंकि आप जीरो पोटेंशियल के ऊपर खड़े हैं, आप कैपेसिटर की उस प्लेट के ऊपर खड़े हैं जो जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, आप ग्राउंड के ऊपर हैं। आप हाई पोटेंशियल वाली या ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर नहीं खड़े हैं, तो आपके ऊपर चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। और जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की वजह से सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं, आप भी जीरो पोटेंशियल के ऊपर हैं, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा दो जगहों के दरमियान। चार्ज या करंट तब मूव करता है जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस हो दो चीजों के दरमियान। तो जब तक आप कंडक्टर को हाथ नहीं लगाएंगे और दूसरा आपका लोअर पोटेंशियल पे नहीं होगा, आपके अंदर से ना करंट गुजरेगा और ना आपको वो फील होगा। ओके सर, थैंक यू। कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड? अच्छा, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो जब भी ये मेंटेनेंस का काम होता है, वापडा वाले जब भी आपके इलाकों में आएंगे, सबसे पहले वो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करते हैं ताकि आर्क क्वेंचिंग की जा सके। उसके बाद आइसोलेटर के जरिए फिजिकली उससे जो है वो ओपन करते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर सकते। अगर ये दो काम करने के बाद आपने तार को हाथ लगा लिया और दूसरा आपने जो है वो ग्राउंड के साथ पाथ कंप्लीट हो गया, तो बंदा जो है वो फारिग है, वो गया। तो ये अर्थिंग स्विच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अर्थिंग स्विचिंग अगर नहीं भी प्रेजेंट, सबस्टेशन पे नॉर्मली होते हैं वहां पर, लेकिन अगर नहीं भी है तो काम करने के लिए स्ट्रे चार्जेस इतने खतरनाक होते हैं कि वही मैंने आपको बताया कि जब मेंटेनेंस वर्क के लिए आते हैं तो नॉर्मली उनके पास एक लोहे की जंजीर होती है, वो यहाँ से उसको फेंकते हैं, तारों के ऊपर होती हुई वो जमीन के ऊपर आ जाती है, ताकि अगर कोई स्ट्रे चार्जेस वगैरह हैं या अदर इसका एक तो स्टेट चार्जेस को इसने डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा फंक्शन इसका ये भी है कि गलती से अगर कोई पावर सप्लाई किसी ने ऑन कर दी है या किसी ने पीछे से नहीं पता उसको कर दिया, तो वो डायरेक्ट ग्राउंड के जरिए जो है वो सारे चार्जेस या सारा पोटेंशियल उस जंजीर के जरिए या और अर्थिंग स्विच के जरिए ग्राउंड पे हो जाए, और जो पर्सनल उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो महफूज रहें। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ, कोई सवाल हो? क्लियर सर। Okay, the next one is the surge or lighting arrestor. Surge arrestor or a lighting arrestor is a device that exhibits a high resistance in mega ohm at normal operating voltages, but a much lower resistance or a short circuit at high voltages. Because this is a component that are usually used to arrest the lighting strokes that occurs on the transmission lines or distribution lines. The high voltage surges can occur due to two reasons: due to lighting strokes or switching. These both cases induce a very high voltage in the distribution or transmission lines that can damage any equipment that is connecting to these transmission lines as well. So it is very necessary to discharge these high voltages before reaching them at the substation, because every equipment or everything is designed for a very a voltage level.
and when that voltage level exceeds a particular level or a value, then it gets damaged. So lighting strokes or surging high voltage have a much higher value than the value of voltage level of substation. So it is necessary to discharge these high voltages that can be discharged with the help of lighting structure, lightning arrestors. Normally, this is a type of lighting arrestor. That red color lines denotes the power transmission line or a distribution line, and the base of this tower on which this is attached is on ground potential. So this is at zero potential. This is on at high potential. Let's suppose you can say that that is on 33 kilovolt or a 33,000 volt, 33 kilovolt. So at normal voltages of 33 kilovolt, the air acts as an insulator and it doesn't break at 33 kilovolt, but its distance is designed in such a way that when the voltage exceeds at a predefined value like 100 kilovolt or a 50 kilovolt or a 200 kilovolt at due to lighting or lightning stroke or a switching surge, the air breaks and discharge that high voltage to the ground before reaching that high voltage surge to the substation. That is mainly the purpose of lighting arrestors, to exhibit a mega ohm resistance at a system operating voltage like 33 kilovolt. At a 33 kilovolt, it exhibits a mega ohm resistance. So current doesn't flow from this point to ground point, but at high voltage or a rise of voltage due to any reason like lightning stroke or a switching surge, it exhibits a lower resistance because it breaks the air medium and it ionizes the air, and it exhibits a lower resistance in ohm, or you can say that a short circuit. So that high voltage surge ground through that lightning stroke, and it doesn't reach the substation and save it from burning or flashing over. Any question here? तो ये लाइटनिंग स्ट्रोक क्या होता है? बिजली जब चमकती है ना, तो वो बिजली कहीं ना कहीं गिरती है. अगर वो वायर्स कंडक्टर्स के ऊपर गिर जाए तो उसके वोल्टेजेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. वो सब स्टेशन पे पहुंच जाए तो उधर जितना इक्विपमेंट लगा हुआ है हर चीज को डैमेज कर देते हैं, जला देते हैं. तो ये उस लाइटिंग स्ट्रोक को अरेस्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर या लाइटिंग स्ट्रोक बिजली की जो गिरती है उसकी बात हो रही है. सर वो तो बात ठीक है, समझ आ गया सर. सर इसके अंदर देखें कि बेसिकली हम इधर ये जो लाइटिंग अरेस्टर है बेसिकली ये कंडक्टर ही होता है. तो हो इट इज़ पॉसिबल कि एक कंडक्टर एट अ सेम टाइम, सेम टाइम नहीं, हाई वोल्टेज के ऊपर लो रेजिस्टेंस ऑफर करे और लो रेजिस्टेंस के ऊपर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे. एक ये बात बता दें. दूसरा ये कि सर पहले ये बात सुन ले फिर अगला सवाल कीजिएगा. आपने कहा ये कंडक्टर जा रहा है ऊपर जो रेड कलर में शो हो रहा है, और ये उसका ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है. ये एट जीरो पोटेंशियल है, ये एट लेट सपोज के 33 किलोवाट नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं 33. और मैं हाई वोल्टेज की अगर बात करूं कि जो लाइटिंग सर्ज है वो 100 किलो वोल्ट की आती है या 200 किलो वोल्ट की आती है. अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमने रखा हुआ है ये हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड. ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस जितना कम करते रहेंगे ना तो फ्लैश ओवर होगा. वोल्टेज को जितना हाई लेवल का वोल्टेज होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस इस तरह से रखते हैं कि 33 किलो वोल्ट के ऊपर ये फ्लैश ओवर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वोल्टेज 100 किलो वोल्ट पे पहुंचेंगे तो ये एयर का जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में, ये हमने इस तरह से रखा होता है कि ये इसको जो है वो फ्लैश ओवर हो जाएगा. तो फॉर अ नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 33 किलो वोल्ट ये हाई मेगा ओम के अंदर रेजिस्टेंस दे रहा है एयर जो है मेगा ओम के अंदर, क्योंकि फ्लैश ओवर नहीं हो रही है, आयोनाइज नहीं हो रही है. बट एट 100 किलो वोल्ट ये एयर आयोनाइज हो जाएगी और इसको शॉर्ट सर्किट कर देगी और इसको लोअर रेजिस्टेंस पाथ देगी. तो एयर ही है जो कि 33 किलो वोल्ट के लिए मेगा ओम के अंदर रेजिस्टेंस दे रही है, लेकिन 100 किलो वोल्ट के ऊपर आयोनाइज होके फ्लैश ओवर करके 0 ओम रेजिस्टेंस दे रही है. क्लियर होगी आपका बात? पहला सवाल. यस सर क्लियर हो गया सर. दूसरा बेसिकली ये जो
ये जो रिंग आपने लगाया हुआ है, मसलन ऊपर कंडक्टर तो है, कंडक्टर के नीचे रिंग लगा हुआ है, तो इसका पर्पस क्या है? ठीक है, ग्राउंड तो वो ये हो जस्ट जाएगा। और डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए है ना, कि ये भी कंडक्टर होगा, जो पोटेंशियल इस वायर के ऊपर है वही इस रिंग के ऊपर आ गया। इस रिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना ब्रेक एवर लेवल कितना रखना है हमने। नॉर्मल ऑपरेटिंग के अंदर इस रिंग को नीचे ले आएंगे तो मे बी बिल्कुल ही नीचे ले आएंगे तो शायद 33 किलो वोल्ट के ऊपर भी ये ब्रेक कर जाए, लेकिन नॉर्मली हम ब्रेक नहीं करना चाहते, इस वजह से डिस्टेंस इसका ऊपर रखा हुआ है। लेकिन इसका डिस्टेंस ऊपर नीचे हम सेट कर सकते हैं कि जितना ब्रेक ओवर वोल्टेज हमें जितनी चाहिए। ठीक है सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अब मुझे भूल गया क्या था क्वेश्चन, क्या था? चले सर मैं पूछता हूँ फिर बाद चलें, कोई नहीं, बाद में अगर जब याद आए तो आप इसे नोटबुक के ऊपर लिख लें। इसे नोटबुक मैंने कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही, जब हम फिजिकल नेक्स्ट लैब के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जब फिजिकल क्लासेस होंगे तो तब भी आप पूछ सकते हैं। जब भी आपको याद आए क्वेश्चन, आप उसे नोटबुक के ऊपर नोट कर लें ताकि वो किसी भी टाइम पे पूछा जा सकता है। तो अभी भी जो क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, रह रहे हैं, उसे नोट कर लें। इसी वजह से मैंने कहा था नोटबुक इंपॉर्टेंट है थ्रू वॉल पॉइंट, ताकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप एटलीस्ट लिख लें अपने पास, ताकि किसी भी टाइम के ऊपर अगले लेक्चर के अंदर या जब फिजिकल क्लासेस होंगी तब हम उसका जो है वो जवाब दे लेंगे। तो अभी आपको जब भी याद आए आप नोटबुक के ऊपर लिख लें, और फिर जब लैब होगी नेक्स्ट तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। रिले के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। नॉर्मली द डेफिनेशन ऑफ रिले इज नॉर्मली अ लो पावर डिवाइस that is usually used to activate or actuate a high power device. Relay can be used to trigger a circuit breaker and other switches in substation and transmission lines or a distribution system as well. Normally we have get a low powered signal through CT or a PT and process that signal in numeric relay, in multipurpose relay, or a microprocessor based relay, and decision, and it actuate a high power device. High power device means a circuit breaker. A relay is a low power device, normally 5 volt or other things, because microprocessor and other things are operate at 5 voltage. So it is a low power device and it gets signal from CT and PTs, etc. And then based on its decision, it actuate a high power device. High power device means circuit breaker. It sends signals to circuit breaker to operate. Normally it makes circuit breaker smarter. So it's a low power device that are not usually used to actuate or activate a high power device. Any question here? The next जब हम is internship कर रहे जी पूछिए सवाल। हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन हमारे पास वोल्टेज होती थी, तो उसके अंदर एक आवाज प्रोड्यूस होती थी, वो किस चीज की होती है? ट्रांसफार्मर के अंदर आवाज प्रोड्यूस होती है? यस सर, जब हम नॉर्मल स्टेप अप को कन्वर्ट करें या स्टेप डाउन को स्टेप अप में। वोल्टेज को स्टेप डाउन या अप करने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर आवाज प्रोड्यूस्ड नहीं होती है, वो कोई और पर्पस या कोई और कंडीशन होगी। वोल्टेज को स्टेप डाउन या ये इधर वो बात कर रहे हैं जब ट्रांसफार्मर पीक लोड के ऊपर काम कर रहा था ना, तो वो साउंड प्रोड्यूस होते थे, हमिंग साउंड कहते हैं, तो वो बात सर ये शायद टैप चेंजर की बात कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर आपने डिज़ाइन सही नहीं है पावर ट्रांसफार्मर का, आपका कोई भी आप कह लें, नॉर्मली जो हमिंग साउंड की आप बात करते हैं ना, ये आपके इम्प्रॉपर डिज़ाइन की वजह से, जो घर के अंदर आपने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, स्टेबलाइजर लगाए होते हैं जो रेफ्रिजरेटर के साथ लगा हुआ है, या फिर आपका जो सही डिज़ाइन नहीं है जो कि जापानीज हीटर के साथ लगे हुए हैं, या फिर इस किस्म के जो लोकल मेड ट्रांसफार्मर हैं जिनके दरमियान में जो ट्रांसफार्मर का अगर आप कंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ें तो उसके दरमियान में जो आपने शीट्स रखी होती हैं, उसके बाद जो इंसुलेटिंग मीडियम रखा होता है उसके दरमियान पे गैप ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ हिस्टेरिसिस लॉस और इस किस्म के लॉस होते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस्ड आपके पास जो है वो होती है। नॉर्मली ये वाला फिनोमेनल लोकल में ट्रांसफार्मर अगर आप लें, जस्ट 220 को 110 के ऊपर आपने कोई डिवाइस लेनी है तो उसके अंदर होगा, या फिर अगर लोकल मेड आपने स्टेबलाइजर लिया है, स्टेबलाइजर भी इसके अंदर एक ऑटो ट्रांसफार्मर ही लगा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो उसके अंदर से भी ये हमिंग साउंड या आवाज़ आती है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर अगर प्रॉपरली डिजाइंड होते हैं ये कंपनी के थ्रू, और तो इनके अंदर ये आवाज़ नहीं आती। अगर आवाज़ आ रही है तो इट मीन्स कि वो लोकल बने हुए हैं और उनके अंदर कोई फॉल्टी कंडीशन है कि वो सही डिजाइंड नहीं है।
तो ये डिफरेंट उसके दरमियान उसकी स्पेसिंग को या उसके अंदर जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं उसको जो है वो कम कर दें या उसको ख़त्म कर दें। नॉर्मली घरों के अंदर जो ट्रांसफार्मर आपने लगाए होते हैं जो कि 220 120, अगर वो हमिंग साउंड दे रहे हैं तो उनकी जो शीट्स होती हैं जो एक दूसरे के दरमियान इंसुलेटेड है, उनको प्रेस करने से ये साउंड जो है वो नॉर्मली ख़त्म हो जाती है, जो कि होती है। और कोई क्वेश्चन? Capacitor banks. Normally in the utilization side, we have major type of load as an inductive reactive load. So we have a lagging power factor at the utilization side. Capacitors are used in substation to keep the level of voltage at a particular point by eliminating the voltage drop that is caused by inductive nature of our load. So capacitor banks are usually used to increase the voltage, or you can say that increase the power factor of our load. So our receiving side voltage would be at rated voltage and at constant rated voltage. So capacitor banks are used to compensate for the voltage drop that is caused by the inductive load or a lower power factor. Any question here? सर ये जो आपने अभी इधर बात की है इंडक्टिव रिएक्टिव लोड की, तो बेसिकली जैसे अब हमारे 220 आने चाहिए तो 110 पे चले जाते हैं, तो जो ये सब स्टेशन के ऊपर फॉल्ट आता है या फिर जो रिसीवर साइड के ऊपर, जैसे हम कंज्यूमर साइड पे होते हैं तो हम इंडक्टिव लोड ज़्यादा सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम की रिएक्टिव पावर, हमारे जो कंज्यूमर साइड पे रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाते हैं। फिर वो कैपेसिटर बैंक को बैकअप लगा के इसको इंक्रीज करते हैं, फिर जाके वोल्टेज को स्टेबलाइज करके फिर हमारे वोल्टेज पूरे होते हैं। दोनों रीजन की वजह से ही हमारे रिसीविंग साइड के वोल्टेज कम हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन इसकी इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री का लोड है या हमारे घरों का जो लोड है, ज्यादातर जो इसके अंदर नेचर ऑफ द लोड है वो इंडक्टिव टाइप की है। घरों के अंदर जो मेजर लोड आपका चल रहा है, जितनी तरह की जो मोटरें हैं, जो रोटेटिंग पार्ट है, हर तरह की मोटर वो इंडक्टिव है। चाहे आपकी पानी भरने वाली मोटर हो, आपके पंखे के अंदर मोटर हो, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर हो, आपका पेडेस्टल फैन के अंदर मोटर लगी हुई है, आपके ग्राइंडर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, जूसर के अंदर जो भी चीज़ रोटेटिंग पार्ट की है वो इंडक्टिव लोड है। आपकी जो ट्यूबलाइट है वो चौक लगी हुई है वो इंडक्टिव लोड है। और मेजर चंक ऑफ द लोड आपके घर का जो बना हुआ है वो इंडक्टिव है। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर भी ज्यादातर काम जो मशीनों के जरिए हो रहा है वो मोटर्स के जरिए, मशीनों के जरिए हो रहा है, उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स हैं। तो जहां भी रोटेटिंग पार्ट आ जाता है वो इंडक्टिव लोड हमारे पास जो है वो कंसीडर होता है, और वो इंडक्टिव लोड होता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा जो है वो लैग कर जाता है। और पावर फैक्टर लैगिंग एक पूरा एक अलग चैप्टर है, उसके डिसएडवांटेज वो मेरे ख्याल में तो आप पढ़ चुके होंगे, छठा सेमेस्टर चल रहा है आपका, तो वो एडवांटेज है, लेकिन वो एक पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन इंडक्टिव लोड की वजह से पावर फैक्टर हमारे पास लो हो गया, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारे पास रिसीविंग साइड के कम हो जाएंगी। तो उस इंडक्टिव लोड को कंपनसेट करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं अपनी तरफ से, ताकि वोल्टेज को या पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। तो उस पर्पस के लिए कैपेसिटर बैंक होते हैं, ताकि जो इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड है उसको कंपनसेट किया जा सके कैपेसिटर बैंक्स लगाकर। लेकिन इसकी और भी रीजंस हैं। हमारी ट्रांसमिशन लाइन भी इंडक्टिव बिहेवियर की तरह शो करती है, तो उसके अंदर जब करंट ज़्यादा होता है तो वो भी वोल्टेज को लैग करती है, पावर फैक्टर को लैग करती है और वोल्टेज को डाउन करती है, तो उसके लिए कैपेसिटर बैंक्स भी इस्तेमाल होते हैं सबस्टेशन के एंड में। लेकिन मेन रीजन इसकी इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड है। और कोई सवाल हो? सर बेसिकली आप देखें कि अब हमारे वोल्टेज मतलब इंडक्टिव लोड हमारा है, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है और हमारे घर के अंदर ट्यूबलाइट्स और मोटर्स वगैरह भी होती हैं, तो उसकी वजह से पावर, जाहिर बात है पावर के ऊपर फर्क पड़ता है। सर उसके जैसे हम जो हमारी जो पानी वाली मोटर होती है उसके पैरेलल में हम क्या कहते हैं कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब सुना था कि ये मतलब अगर हम ना अपने घर की सप्लाई के अंदर या इनर होम के अंदर कोई कैपेसिटर लगा दें किसी सॉकेट के अंदर, तो उससे हमारे जो बिल की कंजप्शन है या क्या कहते हैं कि जो इसकी कंजप्शन है उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है अगर हम कैपेसिटर घर के अंदर लगा लें, तो ऐसा कोई हो सकता है सर? अच्छा, इसके लिए तो ज़रूरी बात कंसेप्ट का ये है कि हमारे घरों के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं ना, जो सिंगल फेज मीटर जो घरों के अंदर हैं, वो रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट नहीं कर रहे, ना ही पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिव पावर बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप घर के अंदर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं किसी भी स्विच के अंदर, नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर भी लोगों ने बड़ी वीडियोस डाली हुई हैं कि जी घर के अंदर कैपेसिटर लगाएं, आपका मीटर स्लो हो जाएगा, आपका मीटर कम आएगा, ये बिल्कुल झूठ और गलत बात है।
इससे आपका पावर फैक्टर जरूर इंप्रूव हो जाएगा और आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है वो करंट भी कम हो जाएगा। वो करंट भी साथ में कैलकुलेट करके मल्टीमीटर से दिखा रहे होते हैं जी करंट कम आपका हो गया है, लेकिन वो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट कम होता है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट आपका कम नहीं हो सकता है। और आपका जो सिंगल फेज मीटर है, जो नॉर्मली घरों के अंदर रेजिडेंशियल मीटर लगे हुए हैं, वो आपके एक्टिव पावर को मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप रिएक्टिव कंपोनेंट कम कर भी देंगे तो उससे वापडा वालों का तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूव होने से सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इसका बढ़ता है। लेकिन आपका बिल कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्टिव पावर के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट को आप कम नहीं कर सकते कैपेसिटर बैंक लगा के। हाँ, जो आपका टोटल करंट आ रहा है वो आपका जो है वो टोटल करंट आपका एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को प्लस करके आ रहा है, तो वो जरूर कम हो जाएगा। जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे जी पहले 10 एम्पेयर करंट है, कैपेसिटर लगाने के बाद वो 6 एम्पेयर रह गया, आप कहेंगे वाह जी वाह ये तो 4 एम्पेयर करंट कम हो गया। लेकिन जो मीटर आपका है वो एक्टिव पावर को कैलकुलेट कर रहा है, तो आपका जो बिल है वो कम नहीं हो सकता, ना ही उसकी रेटिंग कम हो सकती है। तो इसको लगाने से सिस्टम को जरूर फायदा है कि वो आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन आपको चूंकि रेजिडेंशियल कंज्यूमर को या होम यूजर को पावर फैक्टर की पेनल्टी नहीं पड़ती है, इस वजह से वो कैपेसिटर बैंक लगाने का आपको बिल की मद के अंदर फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एज अ यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कमर्शियल मीटर लगा हुआ है जो कि पावर फैक्टर को भी मेजर करता है। तो हमें हर साल पेनल्टी देनी पड़ती है गर्मियों के अंदर कि आपका पावर फैक्टर लो क्यों हो गया है, तो हमें कैपेसिटर बैंक लगाने पड़ रहे हैं। हमने लगाए हुए भी हैं, पैराडाइज कैफे के सामने अगर आप जाएं तो वहां पर कैपेसिटर बैंक्स लगे हुए हैं। इसकी रीजन क्या है, पावर फैक्टर को इंप्रूव किया हुआ है, क्योंकि हमें पावर फैक्टर की पेनल्टी पड़ती है एज अ बिग कंज्यूमर, एज अ यूनिवर्सिटी। लेकिन घरों की बात करें तो पावर कैपेसिटर लगाने से आपके बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट भी कम हो जाएगा और आपका जो है वो पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा, जिसका यूटिलिटी को तो फायदा है लेकिन आपके बिल में फायदा नहीं है। क्लियर हुई है बात? सर आपकी बात तो समझ आ गई है कि एक्टिव पावर के ऊपर जो कमर्शियल मीटर होते मसलन जो हमारे होते हैं लोकल कंज्यूमर के जो मीटर होते हैं वो एक्टिव पावर पे इसके ऊपर हमें बिल चार्ज करते हैं, रिएक्टिव पे नहीं करते। इससे हम अगर पैसा लगाते भी है तो बॉफ्टा वालों को फायदा होगा, हमें नहीं होगा। सर जैसे अब एक मसलन मैं स्पेसिफिक लोड के पैरेलल में कैपेसिटर बैंक अटैच करता हूँ तो सर वो पावर तो बेसिकली वो कम ही करेगा ना, मसलन वो करंट कम विड्रॉ करेगा। और जो मसलन पीछे से उसको सप्लाई मिल रही है वो मेन मीटर से उसको आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर उसका जो टोटल उसकी जो अगर हम पावर ट्रायंगल ड्रा करें तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो जाहिर बात है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसका अगर एक कंपोनेंट भी अगर उसका रिड्यूस होता है तो सर वो बेसिकली पीछे से पावर ड्रा करेगा। अगर उसका एक भी पावर ट्रायंगल का अगर एक कंपोनेंट अगर कम हो जाता है तो पीछे से जो ड्रा करने वाली पावर है या करंट है वो जो ड्रा करेगा पीछे सप्लाई से वो तो कम हो जाएगी फिर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि आपकी जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो आपका कम हो जाएगा, आपकी रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। रिएक्टिव पावर कम होने की वजह से आपकी अपरेंट पावर भी कम हो जाएगी, लेकिन जो एक्टिव पावर है वो नहीं कम हो सकती, जिसे पी कहते हैं। क्यू भी कम हो जाएगी और एस भी कम हो जाएगा, लेकिन पी नहीं कम हो सकता, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका मीटर चल रहा है। आपका मीटर एक्टिव पावर को कैलकुलेट कर रहा है, तो आप क्यू को भी कम कर देंगे, एस को भी कम कर देंगे, रिएक्टिव पावर भी आपकी कम हो जाएगी, अपरेंट पावर भी कम हो जाएगी, लेकिन एक्टिव पावर कम नहीं हो सकती कैपेसिटर को लगाने से। एक्टिव पावर आपकी सेम रहेगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी बिलिंग हो रही है। इसका मतलब सर ये हो ना कि जो हमारे मीटर डिजाइन किए गए हैं वो बेसिकली अपरेंट पावर बेस्ड डिजाइन किए गए हैं। एक्टिव पावर बेस्ड डिजाइन किए गए हैं, एक्टिव पावर को मेजर कर रहे हैं, तो कैपेसिटर लगाने से आपकी रिएक्टिव पावर जरूर कम हो सकती है, एक्टिव पावर कम नहीं हो सकती है। सर अगर चलें ठीक है, ये तो ठीक है, हमें अगर फायदा तो हो गया। सर अगर वापडा वालों को पता है कि लेट्स सपोज अगर मैं बेसिकल सिंगल कंज्यूमर की अगर बात करूं तो मेरे घर अगर एक दो मोटर लगी हुई हैं तो उससे वापडा वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरे सिटीज़ के अंदर मिला दें तो वो इतनी ज़्यादा बन जाती हैं, तो फिर वो हर घर वालों को जो जैसे वो बिल देते हैं उसके बाद बिजली चोरी का लिखते हैं, तो ये भी क्यों नहीं लिखते कि बराए मेहरबानी आप ये लगा दें, बेसिकली तो हमारे मुल्क की बचत होगी ना, तो वैसा क्यों नहीं करते फिर? क्या मुल्क की बचत नॉर्मली जो हमारे पास घरों का लोड अगर है ना, घरों का लोड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री का लोड जो है ना वो बहुत कम है। घरों के अंदर हमारे पास अगर आप बात करें ना, तो जो जिन मोटर्स का पावर फैक्टर कम है ऑलरेडी उनके साथ कैपेसिटर होता है, आपको पता ही नहीं होता। जिन इंडक्टिव मोटर के साथ जिनका पावर फैक्टर कम है उनके साथ कैपेसिटर बिल्ट इन ही मोटर के अंदर लगा होता है उनका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आपको फर्दर लगाने की जरूरत ऐसा नहीं है, यानी कि नॉर्मली घरों का पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर ही होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मोटर हैं, जो कि मोटर भी खुद ही डिजाइन करती हैं कामों के लिए, कन्वेयर बेल्ट के लिए या कोई पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, या कोई
पर्पस के लिए, तो वो लोग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वहां पर चीजें, तो वो बहुत बड़ी बड़ी मोटर है और बहुत ज्यादा जो है वो उनका पावर फैक्टर लो हो जाता है, 0.6 या 0.5 इतना कम हो जाता है, जिसका वापडा को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है जो 3 फेज मीटर और बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, और उनका इफेक्ट भी उनके ऊपर आता है। जिस तरह यूनिवर्सिटी एज अ होल की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा लोड है, और यहाँ पर भी एयर कंडीशन जब चलते हैं या फर्दर चीजें चलती हैं तो एज अ होल हमारा पावर फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी पड़ती है। हर घर के अंदर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपका जो बड़ी मोटर भी अगर आपके पास है, या आजकल जो नए एसी आ रहे हैं, जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, उसके अंदर कैपेसिटर पहले से लगाया होता है। तो घरों का नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर होता है, तो उसको बढ़ाने की या उसको मजीद करने की जरूरत ही ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती, तो वो वापडा वाले वो नहीं करते। प्लस करेगा कौन यहाँ पर, तो वापडा वाले कह देंगे जी आप कैपेसिटर लगाएं, तो आप अपनी जेब से पैसा लगाएंगे कि वापडा वालों का बिल कम हो जाए? आप कहेंगे नहीं जी हमारा तो बिल वैसे ही ज्यादा आता है, तो हम क्यों ज्यादा खर्चा करें इतना? क्योंकि खर्चे की बात है ना कैपेसिटर बैंक, जब तक पेनल्टी नहीं पड़ेगी तब तक आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे नॉर्मली। तो और ना ही इससे कोई सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 0.9 नॉर्मली पहले ही है। तो जिनका 0.6 है और हैवी लोड है, उधर फर्क पड़ता है, उनको पेनल्टी डालते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि जी आप कैपेसिटर बैंक लगाएं। लेकिन घरों के अंदर ऑलरेडी लोड भी कम है और पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर है, तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं कहते, वो नई पेनल्टी डालते हैं जी। ओके सर, शुक्रिया। अच्छा, द नेक्स्ट इज instrument transformers. Normally in substation we have relatively higher voltage and higher currents, and these higher voltages and current cannot be directly fed to voltmeter or a current. For that purpose, to convert that high voltages and high level of current to a lower value of voltage and current for feeding, for measurement and protection purpose, we have instrument transformer that just converts the high voltage into low voltage for measuring purpose or controlling purpose or protection purpose, etc. So these instrument transformers are normally called CT and PT, current transformer and potential transformer, to convert the high value of current and voltages to a lower value for measuring purpose or for protection purpose or for feeding signal to relays, etc. Because we have studied that relay is an actuating device that sense current and voltage and make decision on this level. So relay is normally operating at 5 volt or a normally lower voltage, and substation is at 33,000 volt. So we cannot directly connect relay to the transmission lines or other equipment. We have to use some instrument transformer that converts the 33 kilovolt signal into a lower signal of 5 volt or a 110 volt, etc. And this can be done using instrument transformers like CT and PT. Any question here? Substation grounding system, that is another necessary essential part of every electrical signal. Similarly, substations also need grounding system for protection and providing grounding facilities and save us from the dangers of electric shock under faulty conditions. That grounding is done to dissipate the electric current into the earth when there is a faulty condition. Instead of flowing it through the personnel working on that particular equipment, grounding provides an alternate path for that faulty current to move to the ground. Irrespective of faulty current flowing through the person, that faulty current would flow towards the ground through that grounding system. That is the purpose of grounding system. So it is also done in substation for that particular purpose. The last part of today's lab is wave trap. Normally, electrical lines and electrical substations are designed for 50 or 60 hertz signal, because the frequency of our electrical signal is 50 hertz or 60 hertz. But some power lines are used as a communication medium as well. Some carrier waves and communication waves can reach up to the frequency of
kilohertz, thousands of hertz, and megahertz as well. And these stray signal or a communication signal can damage the substation equipment that is designed for 50 hertz or 60 hertz signal. So wave traps are used to capture that high frequency signal and forbids these signals entering into the substation, because if these high frequency signals enter the substation, these high frequency signal can damage the substation equipment, because this equipment can only be capable of holding the 50 hertz frequency, like any measurement signal, because if you have installed a frequency meter that is measuring the frequency, it has a capacity. It has to measure the 50 or 60 hertz frequency, so it can bear capacity of, let's suppose, the 100 hertz or 120 hertz. But if you apply a signal of kilohertz or a megahertz, that equipment of frequency meter might get damaged. So wave trap are important. They create a high impedance to high frequency communication signal and create a low impedance towards normal electrical signal. Normally, it is an inductor coil which is connected in series with the high voltage power system that creates a stop band or a pass band signal that passes a particular range of frequency, that allow to pass a particular range of frequency through it and blocks all other frequencies. So it is a series inductor coil with a high voltage power system is actually a band filter that allows a frequency of 50 or 60 hertz to pass through it, but blocks all other frequencies of kilohertz and megahertz. So that is the purpose of wave trap. Any question here? So that was the last component of today's lab. So here our lab number 1 completes today, and it doesn't contain any performance, but in lab number 2 there is some performance would be involved. Another thing is that you have to write a notebook for power distribution and utilization lab instead of some lab reports. So it is important, or it is better to write that experiment number 1 or lab number 1 on your notebook regarding this. And then in lab number 2, our lab number 2 would also be online in next week. I don't know time, but it is preferable that the time would be in morning time. So it is requested from the CR that to allocate a time of morning slot for the second week, and from third weeks we would be on campus and physical classes as well. Any question here? सर जो प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है उसमें ये डेफिनेशन और इसी की थ्योरी लिखनी है बस ऐसे ही? जी अभी पहली लैब के हवाले से यही है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल सच नहीं है चीज़, कोई ऐसी यानी परफॉर्मेंस वगैरह नहीं है, तो आप बस ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और ये थ्योरी की चीज़ें ही आप ये वाली जो है वो इसको आप लिखेंगे प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर। ओके सर। सर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि हमने एक प्रैक्टिकल कितने पेजेस पे लिखना? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम की भी नहीं है और मैक्सिमम की भी नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि ये जो लैब की हेडिंग्स है ना, नॉर्मली ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा, क्योंकि ये तो नहीं है, जो हेडिंग्स आपने है ना वो प्रॉपर देनी है। ऑब्जेक्टिव की हेडिंग लाजमी होगी, ऑपरेटर्स की हेडिंग, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की, और इसी तरह फर्दर जब हम अगली लैब्स करेंगे तो उसके अंदर प्रोसीजर, ऑपरेटर्स वगैरह और ये चीज़ें, रिजल्ट्स वगैरह, ये हेडिंग जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ 1, 2, 3 और ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स का ख्याल रखें सिर्फ, बाकी मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक पेज पे भी आ सकता है एक्सपेरिमेंट आपका, 10 पेजेस पे भी आ सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, लेकिन जो हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगा वो हेडिंग्स देना उस लैब रिपोर्ट के अंदर या कॉपी लिखते टाइम वो जरूरी है। हेडिंग के अंदर आप जो मर्जी लिखें, लेकिन हेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर आपको प्रॉपर जब सारी हेडिंग्स आएंगी उसके अंदर तो वो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। लेकिन अभी इसके अंदर 3 हेडिंग्स, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटर्स और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या थ्योरी, ये 3 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है।
और कोई सवाल हो किसी का कोई? अच्छा वेट, मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड कर लूँ। इसके अलावा सर ये बात बता दें कि ये सारे सेक्शंस की जो लैब्स वगैरह सर आप खुद ही करेंगे या फिर मैम मुनीरा और मैं सर इमरान हसन भी कुछ लेंगे? पहले 2 वीक तो मैं ही लूँगा, सेकंड वीक भी मैं ही लूँगा, लेकिन थर्ड वीक से जब फिजिकल आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अभी टाइम टेबल शायद आपका चेंज होना है मज़ीद, तो वो टाइम टेबल के मुताबिक होगा। लेकिन ऑनलाइन तो मैं इकट्ठी सबकी तमाम सेक्शंस की मैं ही लूँगा पहली 2 लैब्स, लेकिन थर्ड लैब से अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है होपफुली तो फिर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हम चलेंगे। और सर ये बता दें कि जो हमारे पहले 2 वीक्स होंगे सर इनमें हमने कॉपी जो है वो लिखनी पड़ेगी या थर्ड वीक से स्टार्ट करें वो? लिख लें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि चेक तो मैं नहीं कर सकता अभी, सीधी सी बात है, ऑनलाइन चेक नहीं हो सकती है। थर्ड वीक के अंदर भी आपको मैं 1 वीक का टाइम दे दूंगा, यानी थर्ड वीक के अंदर भी चेक नहीं करूंगा, लेकिन फोर्थ वीक के अंदर अल्टीमेटली करना तो है, चेक तो करवानी है आपको, फोर्थ ना सही तो फिफ्थ वीक के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम। तो बेटर यही है कि टाइम अभी आपके पास है तो आप लिख लें, लेकिन चेक मैं आपका थर्ड वीक के अंदर भी जो है वो थर्ड या फोर्थ वीक के अंदर ही, आपका थर्ड वीक के अंदर भी मुश्किल है, फोर्थ वीक के अंदर ही चेक करूंगा मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी का कोई? सर अटेंडेंस हो गई है सर? जी मैंने डाउनलोड कर लिया आपकी अटेंडेंस। सर वो इंटरनेट चला गया था सर, दोबारा ले लें? वो कोई भी जो है वो थोड़े से टाइम के लिए भी आएगा तो उसका भी सारा टाइम वगैरह मेंशन हो जाएगा, कोई किस टाइम आया किस टाइम गया, तो ठीक है ज़रूरी सर। नहीं इस टाइम के ऊपर मैंने लिया तो वो वाली अटेंडेंस का मॉड्यूल है, उसके अंदर किसने कितने टाइम के लिए किया, कितने टाइम के लिए कोई इन हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो थैंक यू सर परेशान होने की जज़ाक। ज़रूरत नहीं है कि आप जितने भी टाइम के लिए आए वो इन्फॉर्मेशन सेव है इसके अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, लैब फिर आपकी अवर होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सीआर के जरिए कोऑर्डिनेट करके, मैं कोई सुबह का टाइम कोई लेकर तो फिर हमारी लैब नंबर 2 जो है वो हम सुबह के टाइम रखेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।